Hi guys, नमकीन सच टीम here. This is me Angia. ईशान Nani? और आज हम रिएक्शन देने वाले हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। चलिए सो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्टैचू ऑफ इसके बारे में यूनिटी है के बारे क्या क्या में। चीजें? हाँ। हिस्ट्री यस स्टैचू भी 71 years into independence. Despite the obstacles in its way, India has clearly chosen the path of unity. When the British left India, there were 565 princely states with the option of joining India, Pakistan, or remaining independent. The mammoth task of integrating each princely state with the dominion of India fell upon the shoulders of one man, Sardar Vallabhbhai Patel, our first Deputy Prime Minister and Home Minister. He made the impossible possible. History called him the Iron Man of India, the Great Unifier. Fittingly, his birthday on 31st October is marked as Rashtriya Ekta Divas. It has been a long-standing dream of our Prime Minister, Shri Narendra Modi, to pay tribute to the great Sardar Patel. एक तिरंगे झंडे के नीचे हिंदुस्तान देख रहे हैं, उसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। On 31st October 2013, Shri Narendra Modi, the then Chief Minister of Gujarat, laid the foundation for the tallest statue in the world, the Statue of Unity. In keeping with its ethos, L&T took up the challenge head-on. Located on Sadhu Bed, 3.5 kilometers from the Sardar Sarovar Dam on the Narmada, the Statue of Unity is an unparalleled confluence of engineering and art. Although L&T had successfully completed a plethora of prestigious projects, including power plants and commercial complexes, a structure of such scale was one of a kind. 182 meters. The honor of sculpting Sardar Patel's likeness went to Padma Bhushan awardee Shri Ram Suthar. The first challenge was to select an apt pose and expression to do justice to him. Although L&T's role was that of an EPC contractor, this took an active interest in the selection process. Extensive discussions with historians and experts ensued. After sifting through thousands of photographs, the team was unanimous in how the statue should look. Shri Ram Suthar created sculptures in varying sizes, honing every detail again and again. The latest 3D scanning techniques and computer-controlled production ensured accurate reproduction of minute details. Immense statues the world over have a broad base to achieve structural stability. Sardar Patel's statue was slated to be the tallest ever, and the greatest task was to achieve the design. सबसे बड़ा in the world, yeah, tallest. His dhoti needed to end above the ankle. He is in a walking stance, thus the feet were not parallelly aligned. The assertive stride meant a gap between the feet. But the L&T team was equal to the task. Operations commenced in 2013 with exhaustive surveys of the land, riverbed, river and wind. This was followed by critical engineering design, a test of L&T's experience and technical capability. In such a remote location, planning and logistics would be the key to all the operations. The Loha campaign was launched in earnest with a view to employing used implements donated by farmers around the country as a symbolic tribute. This iron forms the steel rebar in the raft foundation, a homage to the Iron Man of India. A reinforced concrete core, created with critical concreting methods, gave the structure a stable base. This would support the primary and secondary steel trussing.
The bronze plates then covered the एक entire चीज structure, सोचनी पड़ती forming है the sculpture. मेरे क्या है स्टैचू के अंदर की जो इन्होंने इक्विपमेंट्स यूज किए किस तरह से स्ट्रक्चर खड़ा Locally किया है available sandstone used by Sardar एक marble has सेंटीमीटर also का been हिसाब used. करके मेजरमेंट्स के साथ बनाया Besides the हुआ है। statue, other key elements like the memorial and visitor center, main access bridge, bridges and roads were made to precision. The Shresth Bharat Bhavan is a 3-star facility for the tourists and guests. To bring socio-economic development to the region, students and vendors from nearby villages and towns were also trained for the project, thereby generating ample employment. The ultra-modern BIM technology for the design and project monitoring brought synchrony between the team and 30 consultants globally. The statue houses two 200-ton suspended tuned mass dampers to make it stable enough to withstand violent winds plus seismic activity. L&T created macro panel assemblies on site for the smaller micro panel bronze castings. This ensured speed and seamless assembly. Every plate was unique इसके वो and एयर से पता RFID चला है tagged कितना and ह्यूज है कितना बड़ा है। तो ऐसे पूरी वीडियो में हमें अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि इतना the बड़ा है engineered structure transformed and the statue began to एक take एक shape. पार्ट से डिजाइन होके इसकी हाँ। फिक्सिंग हुई है जो अब बीच में पूरा इनका स्टील का जो पूरा दिखाया है वाह। बीच में पहले एक पूरा लोहे से स्ट्रक्चर बनाया है टावर के दैट उसकी वो कवरिंग हुई है And workers from different parts of India have toiled night and day in a united effort unto one goal. अच्छा इन्होंने ये नहीं बताया कितने सालों में बनाया हाँ मैं भी यही मेरा क्वेश्चन भी यही था Colossal enough to remind future generations of his epochal contribution. A structure as enduring as the vision of modern Indian nationhood. As Sardar Vallabhbhai Patel himself said, mankind without unity is not a strength. Only when harmonized by unity does it become a spiritual power. बहुत रियलिस्टिक लग रहा है जिस तरह की डिटेल्स वगैरह फेस पे दिखाई है झुर्रियाँ वगैरह और जो भी रिंकल्स वगैरह हैं इतना रियलिस्टिक फील कर रहा है कि यार बस खाली जान डालना बाकी है और वैसे इनकी पर्सनालिटी से ऑलरेडी सब इतना वो थे कि यूनिटी फैलाना एंड एवरीथिंग और उसके बाद ये स्टैचू भी इतना अच्छा बनाया हुआ है मतलब यार हाँ एफर्ट्स नजर आ रहे हैं और मतलब ये दिखने में बहुत ज्यादा सिंपल मिट्टी का स्टैचू लग रहा है मगर इसके पीछे पूरी एक इंजीनियरिंग है आई डोंट थिंक सो ये महीनों का काम है ये सालों का ही डेफिनेटली काम है कि वो जो बता रहे थे पहले उन्होंने मोल्डिंग की पहले फीलिंग तक पहले तो ये है कि सालों काम तो उसकी बिल्ड में है इससे पहले जो रिसर्च हुआ है कि क्या कितने साइज की क्या चीज आएगी उसको फिर उसका मॉडल डिजाइन इसके बाद उसके हिसाब से वो लोहे का स्ट्रक्चर की फ्रेमिंग देन फिर उसके बाद उसकी वो जो लेयर्स सेट किए उन्होंने तो बहुत बड़ा प्रोसेस है ये छोटे बनाए अलग-अलग साइजेस में बनाए फिर उसको फाइनल किया पोज क्या करना है एवरीथिंग सो यार बहुत हार्ड वर्क है स्क्रैच से लेके और एक इस तरह स्टैंडिंग पोजीशन में बनाना और इतनी डिटेलिंग के साथ तो इट्स टू डिफिकल्ट यार अच्छा और ग्रेविटी का भी तो होता है कि बेस कितनी रखनी है क्या करना है क्योंकि पाँव का जो एरिया होता है वॉल्यूम होता है वो कम होता है बॉडी का ज्यादा होता है तो वो पूरी एक अलग ही अपनी उन्होंने थंडरस्टॉर्म वगैरह भी देखना होता है कि वो गिर सकता है क्या हो सकता है ग्रेट मैन सो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़